Good morning, students. Today in Sanskrit we will do the exercise of Hasya Yoga chapter number 4. So first question is pronounce the following words orally. आपणिकः क्रीणातु पञ्चशत् दृष्ट्वा गृहपाठलेखनं श्वानभयं दंशनस्वभावः परीक्षणं चोरद्वयं लुण्ठनं रूप्यकाणि आगत्य व्यर्थश्रमं कृत्रिम दंतावलिः. So this is your first exercise. Now second exercise. Read the Sanskrit words for the following words. So we will write the Sanskrit words for these words. First one is kharidi. Kharidi means purchase. Second one is bank. Bank means bank. Loot means robbery. Pratishat means percentage. And dukandar means shopkeeper. So now let's see what will be the Sanskrit words for these words. Okay, so here we will write the words. First one is खरीदी. खरीदी अर्थात क्रयणम. क्रयणम. बैंक अर्थात वित्तकोशः. लूट अर्थात लुण्ठनम. प्रतिशत का संस्कृत होगा प्रतिशतम और दुकानदार का संस्कृत होगा आपणिक. आपणिकः अर्थात दुकानदार शॉपकीपर. Okay, so third question is tell who speaks the following sentences. So here I have written this exercise in notebook. So first question is tarhi krupaya dve yantre dadatu. Who speaks the sentence? This sentence? Grahak. So answer will be ग्राहकः वदति. यहाँ पे हमें पूछा है सिर्फ कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है पूछा होता तो हम क्या लिखते, ग्राहकः आपणिकम वदति. दुकानदार से ग्राहक पूछ रहा है, पर हमें क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हु स्पीक्स, कौन बोल रहा है, उतना ही लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे, ग्राहकः वदति. सेकेंड वन भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः. ये वाक्य कौन कहता है, शिक्षक. तो हम लिखेंगे शिक्षकः वदति. इसके बाद है श्वानभयं न अनुभवतु. ये वाक्य कौन कहता है, ओनर ऑफ द हाउस मीन्स गृहस्वामी. So we will write गृहस्वामी वदति. वदति means said. व्यर्थश्रमं मा करोतु. यह वाक्य कौन कहता है, द्वितीयः चोरं वदति. Okay, so this is exercise number 3. Then in our textbook we are having exercise number 4. Replace the underlined words with those given in the brackets and frame other sentences. एतत् यंत्रम क्रीणातु. तो हमें यंत्रम की जगह क्या क्या लिखना है, फेनकम पुस्तकम और फलम. फेनकम मीन्स फैन
Pustakam means book. Phalam means fruit. Give me that, I want to buy that machine. उसकी जगह I want to buy that fan. I want to buy that book. I want to buy that fruit. तो हम यंत्रम की जगह क्या लिखेंगे? एतत् फेनकम क्रीणातु. I will show you in notebook. यंत्रम की जगह हम क्या लिखेंगे? फेनकम. So what will be the first sentence? एतत् फेनकम क्रीणातु. सिर्फ हमें यंत्रम की जगह फेनकम लिखना है. उसके बाद होगा एतत् पुस्तकम क्रीणातु. और थर्ड होगा एतत् फलम क्रीणातु. You can write like this, phalam or phalam. Both are right, okay? So, like first sentence, let's see other three sentences. सा भोजनम करोति. दुग्धपानम दानम प्रार्थना. तो सा भोजनम करोति, सा दुग्धपानम करोति, सा दानम करोति, सा प्रार्थनाम करोति. व्यर्थ श्रम मा करोतु. व्यर्थ व्यवहारम दुर्व्यवहारम व्यर्थ व्ययम. व्यर्थ श्रमम मा करोतु की जगह क्या होगा? व्यर्थ व्यवहारम मा करोतु. डोंट मिसबिहेव. दुर्व्यवहारम अगेन सेम, दुर्व्यवहारम मा करोतु. एंड व्यर्थ व्ययम वेस्टेज. व्यर्थ व्ययम मा करोतु. सो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द वर्ड्स. श्वान भयम न अनुभवतु. उसकी जगह में क्या लिखना है? चोर भयम, सिंह भयम, अंधकार भयम. चोर भयम न अनुभवतु, सिंह भयम न अनुभवतु, अंधकार भयम न अनुभवतु. So this is your exercise number 4. You have to write all the options of each sentence. Means first you will write this sentence, then answer 1, answer 2 and answer 3. answer 1, answer 2, answer 3. ऐसे करके आपको ये चारों चार के 3-3 सेंटेंसेस बनाने हैं. इसके बाद है फ्रेम सेंटेंसेस. फॉलो द इलिस्ट्रेशन. एतत् डैश डैश अस्ति. इन ब्रैकेट यंत्रम क्रयणम. एतत् यंत्रम क्रयणयोग्यम अस्ति. सो व्हाट वी हैव टू डू? इन सेकेंड वर्ड वी हैव टू ऐड योग्यम. एतत् डैश डैश अस्ति पुस्तकम पठनम. एतत् पुस्तकम पठनयोग्यम अस्ति. एतत् स्थानं भ्रमणयोग्यम अस्ति. एतत् चलचित्रं दर्शनयोग्यम अस्ति. एतत् जलं स्नानं योग्यम अस्ति. So we will write it in our textbook. एतत् पुस्तकं पठनयोग्यम अस्ति. ओके. एतत् स्थानं भ्रमणयोग्यम अस्ति. उसी तरह बाकी के भी आपको लिखने हैं. Change forms of verbs. Follow the illustration. You have to change the forms. First one is भवति. भवति का हुआ भविष्यति, भविष्यामि. तो उसी तरह आपको वदति, करोति और तरति का करना है. वदति मीन्स he speaks or speaks. वदिष्यामि
sorry, vadishyati. Vadishyati means he will speak or she will speak, or vadishyami means I will speak. तो वदति का भविष्य रूप ही शी के लिए क्या होगा? वदिष्यति. और स्वयं के लिए I के लिए क्या होगा? वदिष्यामि. करोति का करिष्यति फॉर ही एंड शी, और I के लिए क्या होगा? करिष्यामि. तरति. तरति मीन्स स्विम. तरिष्यति. तरिष्यति he or she will swim. तरिष्यामि I will swim. Okay. Now ज्ञातव्यम, some extra knowledge. They have given us the names of the fruits in Sanskrit. Amram, Sitafalam, Badaram, Sevam, Jambufalam, Dadimam, Kadalifalam, Narangam, Amalakam, Nimbukam, Kharbuzah, Narikelam. So what you will do? You will write down these names along with the picture. Along with pictures. You can stick the pictures or you can draw the pictures of these fruits, and then you will name them in Sanskrit as well as in mango. So this is your activity which is compulsory for everyone. Everybody will do this activity in their notebook. You can do this activity in small chart paper or other simple plain paper which is available at home. Okay, and you will submit me in the mail. Next period we will do our next chapter.